Namaskar to everybody. So I'd like this session on Mission Shakti to be started with a small video which will encapsulate the entire journey of Mission Shakti. And like Odisha is known as the best kept secret of India, there are a lot of secrets within Odisha. We hope to unravel the women's empowerment journey of Odisha. Video please. Mission Shakti. Initiated in 2001 by the Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, is a flagship women empowerment initiative by the Government of Odisha aimed at holistic empowerment of women. शक्ति मिशन शक्ति मिशन शक्ति मिशन शक्ति मिशन शक्ति मां मानकर शक्ति. Having incorporated 70 lakh women into its fold across villages and towns of Odisha, Mission Shakti today is a vibrant transformational force. The aim now is to grow from SHE to SME. Unique livelihood promotion, skilling, institution building, financial inclusion and market linkage initiatives of Mission Shakti strive towards graduating SHGs to small and micro enterprises, generating employment, increasing income and transforming the lives of millions across the state. Government of Odisha has set up a dedicated department of Mission Shakti for empowerment of SHGs, the first in the country. Driving this forward, Mission Shakti department has been focusing upon building the capacities of women SHGs while ensuring the sustainability of their initiatives, introducing avenues for inter-agency convergence for skilling, livelihood promotion and market linkage development, improving financial inclusion through access to financial services and investments, and promoting favorable policy formation and advocacy to bring about systemic changes that promote economic empowerment amongst women. Cabinet in its first meeting approved provisioning of Rs 5,000 crores of government services and procurement of goods through SHGs over 5 years. In the last 3 years, more than 1 lakh SHGs have received government business worth over Rs 4,500 crore in convergence with various departments. Rs 50,000 crore bank linkage in the next 5 years is projected. In a pioneering step, Government of Odisha grants interest subvention benefits up to 5 lakh loans for all SHGs. In past years, more than 3.5 lakh SHGs have availed this benefit and Rs 505 crore has been into the accounts of women as interest subvention. With an objective of providing sustainable livelihood solutions to producer SHGs for selling their produce, Government of Odisha through Mission Shakti is supporting the establishment of a robust retail distribution network across the state under the brand name Mission Shakti Bazaar. The state government has made a historic decision of setting up 500 Mission Shakti Bazaars across the state in the next 5 years. This transformative marketing initiative will augment women's financial freedom in the digital era and increase the bargaining power of women producers by reaching out to buyers beyond the district, state and national boundaries. Not only are millions of women gaining fruitful employment and economic independence, through Mission Shakti, they are also partners in the transformation of new Odisha. Thank you. So that was a short video on Mission Shakti. Now I'd like to just show 4 or 5 slides to tell the audience what Odisha is doing differently. Because SHG is not something that is new to any state. Every state has its SHG movement. But I believe, and the facts also show for themselves, that Odisha has done something that's very different. So slides please.
So as you see, this is the cabinet decision that was taken in May 2019 after government came to power after the 19 elections. It was the first decision taken by cabinet that 5,000 crore worth of goods and services would be taken by government from SHGs. So both goods and services. This is unique, unprecedented, and it is not existing in any other state of the country. Next, please. As part of this cabinet decision, you see what has been happening is women run buses across the state under the Lakshmi scheme. There are 30 blocks where operation and maintenance of AC buses are done by our women's SHGs. And these are the different departments where you can see the value of business given as well as the incentives and the commission that is earned. There are things like electricity meter reading, which is being done by our women SHGs. Pisciculture in Gram Panchayat ponds in Odisha is completely done by women's SHGs. After women's SHGs have a say, only then, if needed, it is auctioned. Then under different departments, like school and mass education department, uniforms are given by SHGs, midday meal is done by SHGs. In the WNCD department, a 500 crore business of take-home ration of Anganwadi centers is done through our SHGs. So this is a very unique step that Odisha has done. Next. The pictures show the story. Pisciculture and GP tanks, and these are real SHGs doing real work. Next. Electricity meter reading, they go house to house, and the electricity private distribution companies say wherever women are employed, it is better for them. Their electricity dues are filled up easier and faster, and the commissions are given in a much more systematic manner. Next. Paddy procurement through iris scanners and computer reading is done by our SHGs in many, many places. Gradually, we are increasing the numbers of our SHGs doing this. Next. This is something else that Odisha is doing differently. If you see credit flows from 2018-19 to 23-24 today, it's an increase of 800% of credit from banks which women are taking in Odisha. 15,000 crore worth of credit is going to our women SHGs in this year alone. And this is fueled again by a government push that the entire interest component up to 5 lakh is paid by government. And it is back-ended in the sense that the women pay it first to the banks and then it is reimbursed back to their account. So it encourages the banking habit. Next. This is the amount of interest that has gone back to women SHGs. This is something that no state is doing in the country right now. Encouraging women to take credit from banks, repay it, become good lenders and utilize it to run businesses or even for their consumption needs. Next. This is a push towards mobility. Our government is giving scooter loans to most of our EC members and to most of our community support staff. As you see, they are running buses. They are also taking scooter loans for their own day-to-day needs. Next. These are our district leaders on a trip to Dubai. Routinely, Odisha government sends its women leaders on exposure visits to places like Dubai and Singapore. Because all of us, we know we learn through exposure. So why not our rural women? Next. And this is the philosophy of our government headed by Honorable Chief Minister. Now, I've shown you a lot of pictures. Sometimes facts and statistics do not tell the whole story. As Secretary of this department for a considerable length of time, I would also like to share one thing. The Odisha story of women's empowerment is different because we are not just tracking finances and numbers alone. Okay, we said 15,000 crores, but Andhra, Tamil Nadu, Karnataka may be giving much, much more than we are giving. For us, finance is just one vertical. At the core of our women's empowerment program is dignity, respect, and identity. It is a curious case of identity politics, which is inclusive. Women who were nameless and faceless for decades, for centuries, women who had forgotten their names, being just somebody's wife and somebody's mother, today they have an identity and a platform because of Mission Shakti. And how is that identity created? Because for us, no government program is complete without the inclusion of women's SHGs. We spoke about BSKY, the Swasthya card.
There is a component for women, but our women SHGs are the key people who go from house to house to create awareness about BSKY. So every government department uses our SHG network to build a link between government and community. That is why when COVID struck, and thankfully Odisha under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik handled COVID well. A big group of warriors were our women SHGs who came out on their own when educated people also were afraid to come out of their homes in fear of what this virus is. It was our women who went home to home and explained that this is how you can save yourself from COVID. Or they ran TMC centers where our migrant laborers came and stayed. They took up the leadership burden of the state. So this is where dignity comes into play. And now if you've noticed, on the 16th, again in unique Odisha style, on the 16th of this month, a very nice scheme was passed by Parliament by our Odisha Assembly, our cabinet passed it, where 730 crores of money was given to give uniforms to our SHGs. Now, sari to SHG is nothing new. Many state governments would have done it. But there is, like in Odisha, if you read within the lines, there is a blazer assistance which is inbuilt into it for our women SHGs. Blazer is something that is associated with corporate India, with elite public schools. Why rural women and blazer? Because that is the core of our identity. If Honorable CM's vision is SHG to SME, as you saw, from being Swayam Sahayak Goshti to becoming nano and startups and micro producers, then a dress or a uniform is part of their identity. So they go smartly dressed with their blazers to Dubai, to Singapore. They go for business meetings. And we have our smartly dressed Vishnu Priya Das here, who is from Mayurbhanj, and she'll be talking very soon. So this is what Odisha does best. And I say this in every platform. I will again repeat it here. Groups of women come to meet our Chief Minister at regular intervals. Most meetings in district collectors' offices are incomplete without SHG participation. And you know, in states like Odisha, in eastern India, in most states of the country, if you have a foothold in government, you get a different identity. So an SHG member, when she walks into district collector's office, BDO's office, she walks into the residence of Honorable Chief Minister to have a meeting with him or a cup of tea with him. It changes the power dynamics in her community back home. You think of domestic violence, you think of the way people look at women if she's just come back from the meeting with the head of the state. So this is what we routinely encourage. When groups of women come and meet Honorable Chief Minister and he asks them, this is a story I'm narrating which is a true story, and he asks them, are you getting water, are you getting rice, are you getting your health benefits? One of the elderly women from Ganjam caught his hand and said, you've given us that, that's okay. But you've given us something far more than that, which nobody in our life has given us. She said, Bapa ghare bhi mili nahi, sasu ghare bhi mili nahi. Means we've not got it from our parents' home, we've not got it in our marital home. You have given us parichay, identity. And that is the core of Mission Shakti. When there is confidence in the women of a state, they go and they will disturb the power elite system of the villages and the communities. They will raise their voice wherever they have to, because we believe empowerment is holistic. It cannot be financial or economic or political. It has to be all in all. And that is the philosophy and the core of Mission Shakti. Now I know I've shown you a video, I've shown you slides, I have spoken as secretary. But again, that's not the whole story. We've got two of our shining leaders who have come from Mayurbhanj and from Koraput, who will talk to you about their stories. And I would request them to join me on stage so that what we are saying, you know, when Odisha talks, what we say is the truth. So I present to you two of our finest leaders. Please come. Will you? Thank you. So I'm going to introduce our two exemplary women leaders from Mission Shakti here, though, I mean, I really cannot cover the entire gamut of the exceptional work they have done to uplift women and even their entire communities. So we have with us Ms. Shrimati Vishnu Priya Das. She's the DLF president at Mayurbhanj.
from not earning enough to run her household, she today has helped 40,000 women in 26 blocks of the district to earn their livelihood. We have another dynamic leader with us. She's fondly called the Millet Queen in Odisha. She's Miss Raimati Ghiuria. She has conserved 72 traditional native varieties of rice and 30 varieties of millets. Not only that, she has also trained 2,500 farmers on innovative methods of finger millet cultivation. Let's hear more from them about their inspirational journey. जय जगन्नाथ आजिर इंडिया टुडे प्रोग्राम आमर कमिशनर मैडम महोदय आमर जो कोरापुट आसथिबा मांडिया क्वीन सभा परिचालना करथिबा मैडम उपस्थित समस्त भद्र व्यक्ति मैडम मन को मु हार्दिक अभिनंदन जनाउछि कहिला बेलको आखिरे लुह बाहरी जाउछि मोर इच्छा नथिला जे पछकु फेरी जाय पाई 2001 मिशन शक्तिर शुभारंभर सुजोग नहीं मो ग्रुप टी तैयारी होइतिला सॉरी मो परिचय दिया पाई भूली जाइछि मो नाम विष्णुप्रिया दास मयूरभंज मिशन शक्ति महासंघर सभानेत्री मरड़ा ब्लॉक चित्रोड़ा आदिवासी लधा एरिया रे मो घर 2001 मसिया शुभारंभ होइतिला मो ग्रुप बीए पास कला परे मु ट्यूशन करथुली गाँ रे बापा माँ समस्ते थिले बापा मोर शिक्षा अनुष्ठान प्रेमी एते थिले जे घर प्रति ताकर नजर नथिला एटा ए स्टेज रे मु सत्य घटना मु सब कहूची आपण माने भी फील्ड के जाई कि मो विषय इनक्वारी भी करि परिबे सब बेले बापा कहूतिले झियो पिला दरकार नै पाठ पढिबा मो गाँ रो जदी अनुष्ठान मु तैयारी करे अन्य माने चाकरी करिवे बहुत कष्ट रे मां को पाई माँ पंचम श्रेणी पाठ पढ़ुले माँ को पाई मु मैट्रिक पास करली आए पास करली बीए पास करली गाँ कॉलेज रे हठात मते अंगनवाड़ी दीदी डाकिले जे आसो सेठी मिशन शक्ति एसएचजी मान को डकाई आपण माने बसिबे मीटिंग सुनिबे मु सतले घृणा करली हे गाँ रे जीबी माँ मान सहित मिसिबी कौ जाति नहीं कौ जाति हेतिबो मु बीए पास करची जमा गलिनी 2 दिन चली गला 3 दिन चली गला एमती बसुताई चाकरी पाई बहुत एप्लाय कली किछि भी मिललानी ट्यूशन कली बापा मो कथा बुझिलेनी कहला बेल को आखिरे लुह बाहरी जाउची सेई अंगनवाड़ी दीदी दिने मते ताकर डाहण हाथ मो बाँ हाथ धरी टाणी नैथिले से अंगनवाड़ी दीदी को मु धन्यवाद देबी जे मिशन शक्ति विभाग को मु धन्यवाद देबी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देबी आज मु आपण पाखे ठिया आम स्टार्टिंग रे 20 टंका लेखा दौली से 20 टंकार मुढ़ी बिजनेस प्रथम आरंभ करते जो माने मिसितिले मेंबर होइतिले से माने मुढ़ी भाजुतिले हांडी रे गाँ गली रे हांडी रे मुढ़ी भाजी आप जानिथिबे मते मुढ़ी भाजी आसेनी मु कहली आहुरी तलको फेरी जीवी ना मु जिद्दी कली से माने मुढ़ी भाजीबे चावलटा मु जुगेई देबी जाओ से मुढ़ी भाजु भाजु मु आज डीएलएफ रो प्रेसिडेंट हे पारची बीएलएफ रो प्रेसिडेंट हेची जीपीएलएफ रो प्रेसिडेंट हेची दुबई रे उड़ी जाईची कारण मु केबे स्वप्न देखि नथिली जो बिजनेस विषय मु जानी नथिली मोर गणित रे बहुत कम होउतिला सेई विषय आज मु एते ज्ञान आहरण करिछि जे मु गर्वित सबले मन करे जदि मिशन शक्ति न था मु आत्महत्या करथांती जदि माननीय मुख्यमंत्री ए योजना न करथांते ताले मु आत्महत्या करथांती आ किछि मो पाखरे उपाय नथिला कारण मु सब बेले चाहूतली मु निजे गोटे केमते ठियाबी जाऊ बहुत बहुत धन्यवाद ताको पाद तळे मो मथा माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सी जदि ये प्लाटफॉर्म तैयारी न करथांते सी जदि माँ मान कथा बुझी नथांते सशक्तिकरण माँ मान हेई न पारथांते आज माँ माने गर्व सहकार कहते मिशन शक्तिर माँ आज एसएचजी रु एसएमई हेचंती सही 100 गोष्ठी सदस्य माने आपण देखंतु जो जीपी फेडरेशन ब्लॉक फेडरेशन जिला फेडरेशन हेची कहा पई से मिशन शक्ति जड़े अच्छा सारथी माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पई
एबे जो मैडम देखले वीडियो देखले मैडम कहले कोविड समय कथा आम जिते कोविड समय कथा मन पड़ो बहुत दुख लगे सेते बेले खाया पाई नथिला एसएचजी पाखरे से समय क्वारंटाइन खाद्य किए दब प्रवासी ओडिया मान कथा किए बुझीब से स्वयं सहायी गोष्ठी सदस्य माने बुझुतिले किछि पैसा पाउथिले किए खाद्य देकी पैसा पाउथिला किए हमर सेंटाइन आत्मा सॉरी हमर मास्क बिक्री कर पैसा पाउथिला किए अवेयरनेस प्रोग्राम करूथिला जहा फल से माने पैसा दी पैसा पाउथिले पण ग्रामांचल हो सहरांचल हो आ आपण को जो मेला हो पॉलिसी मेला होची मिशन शक्ति माध्यम जे मेला करा होची सेथिरे भी मां माने अंश ग्रहण करूथिले एबे मां माने आउ काहाकू हाथ पतौ नाहंती जो मां माने पर्वपर्वाणी हेले स्वामी पाखरु हाथ पतंती भाई पाखकु मागिबे बापा को मागिबे एबे गोटे चॉकलेट पाई कि सिंदूर पाई कि ड्रेस पाई कि साड़ी पाई किछि रा में हाथ पतौनु आमे दउछ एबे आपण माने विश्वास करिवे यार कांसेप्ट को आपण जानतु देखिबे गां गळी जो माने बीएलए पर अछंती जो माने डीएलए पर अछंती जो माने जीपीएलए पर अछंती आमे मकर पर्व हो काली पूजा हो दुर्गा पूजा हो महिला क्रिकेट खेल हो आमे माने चांदा दउछ एटा के हम माने पई गोटे बड़ अचीवमेंट जो या पर आमे पीजी ग्रुप कलु पीजी परे आपनकर प्रोड्यूसर कंपनी कछु सेठी मैनेजिंग डायरेक्टर अछि अगरबत्ती प्रोड्यूसर कंपनी मो ब्लॉक फेडरेशन तरफ करा होची से अगरबत्ती टी आमे मार्केट रे सप्लाई करूनु आमर जिला फेडरेशन स्थिर कराई ब्लॉक फेडरेशन स्थिर करची जो इसी मेंबर माने अछंती जो अगरबत्ती दाम 10 टंका आमे करिचु जो इसी मेंबर माने जिबे डोर टू डोर जाईकी अगरबत्ती बिक्री करबे 2 टंका से मानकर 8 टंका हम कंपनी को फेरेबे जदि आमे मार्केट को देबू आमर जो स्वाभिमान को बाधा सृष्टि हब कारण आमर जिनिस माँ माने पांतु आमे हलदी गुंड कहू लंका गुंड करूचु जीरा गुंड करूचु से सब आमे मार्केट को छाड़ीनु जदि आम पाखरे 4,52,000 माँ रही 4,52,000 माँ मान पाखरे जदि आमे मार्केटिंग करि परिबा समस्त तो हलदी गुंडर आवश्यकता रही जीरा गुंडर आवश्यकता रही अगरबत्ती आवश्यकता रही साबुन आवश्यकता रही फिनाइल आवश्यकता रही कहीं से मार्केट रू किणवे आम पाखु न किणवे कहीं कारण से तो मिशन शक्ति विभाग यथेष्ट ट्रेनिंग दौची बीएलए माध्यम जीपीएलए माध्यम डीएलए माध्यम आ गोटे खुशी माने कथा मोर पासपोर्ट हो नथिला मु माड़ा पाखे एत कृतज्ञ ज्ञापन कर माड़ा पासपोर्ट होती प्रथम फ्लाइट बहुत कांदी आ डेली राति रे कहे पासपोर्ट ऑफिस रे केते टंका दे दियो ना हे जाऊ मो हस्बैंड गोटे कथा कहते व्यस्त जमा होनी तो निश्चय उड़ीबू माड़ा मते फोन कले मोर पासपोर्ट हो पारुनी कारण आधार कार्ड और मैट्रिक सर्टिफिकेट मैच होनी कारण आमे चाकरी करिवार नाही एते बड़ बयस हो गला आमे तो एसएचजी काम रे लागिचु जाऊ मैडम को पाही मो उड़ी उड़ी फ्लाइट रे दुबई जाइथिली मो प्राउड फील करूची आपण माने किछि माइंड करिवेनी आमे हीरो हिरोइन मान का सहित सेल्फी नौ किंतु मो सहित दुबई रे सेल्फी नहीं चंती मु दुबई रे बाइट देइची मु बहुत प्राउड फील करे कारण मिशन शक्ति एमिति गोटे प्लेटफॉर्म मते मैडम मते पछरे कहउचंती आउ कुहंतुनी एटा सरीबनी मु जा पाइची माने अधा आपण को शॉर्टकट रे सरी देली मु जा पाइची मु केबे एटा सरी गाउछु मो मन दुख लागुछि मु किछि कहि पाली आपण मान आहुरी कहि थांती आ आपण मान जो एबे घोषणा करा गला माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करले एसएचजी मान का पई प्रति सदस्य मान का पई 1000 टका यूनिफॉर्म बाबद रे एटा गोटे सम्मान देले माननीय मुख्यमंत्री जो इसी मेंबर माने ब्लेजर पिंधिबे हम केते खुशी लागुछि हमको गां घोळे डाकुतिला गरु ना धरिकी तापर डाकले दीदी तापर डाकले दुबई दीदी एबे डाकुचंती नवीन झियो तेणु मु मिशन शक्ति विभाग को माननीय मुख्यमंत्री को बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची चलापथ कुसुमित हो जगतर नाथ जगन्नाथ तांकर दीर्घायु करंतु माड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद आउ तो कहया सुजोग दौना तथापि आपण माने जदि मते केबे डाकिबे मु निश्चय कहिबी आउ गोटे कथा शेष रे कहूची जो लोधा एरिया रे केबे एसएचजी करू नथिले जो गाँ गहली रे मो जो मोरडा ब्लॉक चित्रोड़ा गाँ रे मुस्लिम संप्रदाय रो माँ माने एसएचजी करू नथिले
किंतु मु जाइकी ताको चर्च रे बसिली ताको मस्जिद रे बसिली मुझे कहीं आपण मैंने एसएचजी ग्रुप सामिल हेबेनी सेठी कोन खराब काम होउची कि आपण माने चलतु तांकर जे गुरु थिले मते डाकिले जा हूँ मु बहुत प्राउड फील करी 50टा मुस्लिम संप्रदाय ग्रुप तैयारी करिची आउ जो लधा मानक कथा कहउचंती तांको पिला मानक चॉकलेट देई मां मानक बसा जाई जते बेला चॉकलेट सरी जीवो मां माने मीटिंग रु उठी जांती जा हूँ बहुत प्राउड फील करची से लधा संप्रदाय रो एसएचजी मां माने 70टा एसएचजी करचंती तांको झियो जने मास्टरानी हे जाईची तेणु धन्यवाद आउ किछि कहूनी एका संगे कहबा जय जगन्नाथ धन्यवाद Can call her. Everybody must have understood. You must have understood the passion and confidence in her story. Because of shortage and paucity of time, we'll go to the next speaker. So I would now like to request Ms. Raimati Ghiuria to come and speak and share her story with us. मैडम को मोर नमस्कार मोर मंचर बसवा सार मन को दीदी मन को समस्त को मोर नमस्कार मोर ना हूँ रायमती गिरिया मो गाँव हूँ नुआगुड़ा मुई कोरापुट अच्छी मु गोटे ओडिया घर झील आरी ओडिया घर बो मु गोटे चाषी घर झील मुई चोट बेल रु चाष करवार जानची मुई चाष करवा केमती शिखली बोले आमर पद्मश्री कमला पूजारी माँ पाखरे जाई शिखली मुई चोट बेल रु तार संगे जमी को जीवार आउरी केंती देसी वेराइटी की कलम जड़बार देसी वेराइटी केंती आके नेबार से गोटे जमी लगे लगेइला सी मके सब दिन डाकी करी नेबार मुई देसी उपरे बहुत गुरुत्व देली आरी मुई तो पाठ पढ़ी नाई पाठ पढ़ी तिल्ली सिना मते काम के लगाई देले मी काम रे व्यस्त हेली आमर घरे काम करवा लोक न रहला बहुत असुविधा रहला खाइबा पाई मिसा आमर घरे न रहला बहुत कष्ट करी बंतिरलु आमी आमर माँ बाबा मन मके कांदा कोड़ी आनी कहतिला बणे जंगले जाई करी करडी कांदा एंती जाको आनी करी हमके सिजेई करी मिसा देला अछत आमी खाइलु अछ आमी आमर भाई भौणी मिसी करी बहुत दुख मिसा लागसे बेतले सरी बहुत कष्ट मिसा लागलानी आरी मुई सेंती नहीं करी मुई लोकर घर बुती जाई करी मिसा मोर भाई भौणी के फसली अछि चोट रेली मात्र गाड़ी बाटे मन काम को जीवा सेंती जाई करी मुई मोर भाई भौणी मोर बापा माँ के साहाय्य करतिली केंती मोर भाई भौणी बंचबाई बोली ता संगे मुई देसी वेराइटी दान केंती आगे नेवा पाई मुई जानली कमला पूजारी माँ पाके जाई कर शिखली सबुदिने जाई करी तार लगे शिखबार आरी तार संगे संगे मुई आमरो मांडिया जातीय बुड़ी गालानी सेटा केंती आगे नेबी आमर पिला चुआमन एबर पिला चुआमन मांडिया के छाड़ी देलाइनी केंती मांडिया खाइबाई से उपरे मुई शिखली आवरी मांडिया मुई 5-6 प्रकार मोर पाखरे बिहन रहला गोटे एनजीओ संगे मिसली से स्वामीनाथन बोली तांके देलाई मोके केतरा वेराइटी आवरी शिखेलाई केंती दाड़ी रे रुआ करा जाइसी केंती सिरी पद्धति रे रुआ करा जाइसी से उपरे मोके शिखेलाई मोके ट्रेनिंग मिसा देलाई सेटा शिखली आवरी करली मिसा आवरी हमको मांडिया पिटबा पाई आरी मांडिया गरबा पाई बहुत असुविधा आईतिला बहुत कष्ट मिसा लागतिला आमी तेतली जाटी संगे मांडिया के चब्बार नईले डेकी संगे कुटी करी ताका मंजी बार करबार बहुत कष्ट लागतिला आमके मिलेट मिशन आइला आरी हमरो मिशन शक्ति संगे मुई तांगर संगे मिसली तांगर संगे मिसी करी काम कली काम करी मके एबे मुई तांके कहली मिशन द्वारा केंती मांडिया चब्बाटा एसीटा हमके गोटला देले ता बोली कहला कि ना हमके मांडिया तेसर गोटे देलाई मांडिया मंजी चढ़ाइबा पाई तेसर देलाई मांडिया चूना करवा मिल देलाई हमके एबे बहुत सुविधा लानी मांडिया रे ग्रुप मामन मिसा तांको टाइम मिसा बंचलानी काम करबा का तांको टाइम न होइतिला हमको मांडिया काटबा का लेट लागतिला मांडिया पिटबा का लेट लागतिला आरी मांडिया घास बाचबा का मिसा बहुत लेट लागतिला मांडिया घास बाचबा पे हमके उडेर गोट लाग देलाई एबे बहुत सुविधा होला माँ मन मिसा बहुत खुशी आचत आरी मुई माँ मन के केंती मांडिया रे आइटम तैयारी कराइसी से ऊपर मुई ट्रेनिंग नेली आरी माँ मन के मैं शिखेली मांडिया पिला मन केंती खाई पारबाई
मांड्याके आमी दोसा पाउडर तैयार कलु आरी नाड़ी मिक्सचर आरी बोरा जिलापी ए जाक आमी तैयार कलु आमर ग्रुप माध्यम गोटे टिफिन सेंटर कराला टिफिन सेंटर लगे आमी ग्रुप मा मन नहीं करी तैयार कलाइनी आरी मांडिया आमको बिक्री बाटा पाई बहुत असुविधा होता आटे बाटे नहीं करी 2 टांगा 3 टांगा 15 टांगा एंती केजी के बिकतिलु बहुत असुविधा होता चाषी मन बहुत लॉस हो जाइतिला सिरा पाई एबे हमरो मंडी तैयारी कराला मांडिया मंडी हमरो केतरा ग्रुप के नहीं करी गोटे एपीओ तैयार कराला आरी से एपीओ लगे मुई मिसा डायरेक्टर आची मुई सिटी हमरो जतकी सीआरपी बनाचो आरी हमरो लेखापढ़ा जे कलाइन हम तो लेखापढ़ा जाना नहीं लेखापढ़ा जे कलाइन तांके मिसा दरमा देलुनी एबे हमरो मंडी चलला छे मगे हठात मैडम मन डागलाई सिटा पाई बारी आइली आरी मुई आरी केंती आके गाली वाला मुई एटा जानी न पारली आके केंती जीबी बोली मुई चाहतीली जे केंती आके जीबी चासी मन के केंती आके नेबी सी ऊपर चाहतीली मुई दिल्ली गाली आमरो चेन्नई गाली सब ताने गाली जाई जाई दिल्ली आरिगड़ तर मते दिल्ली जीवा पाई डाकरा आसिला 3 दिनिया मीटिंग रेला आरी गोटे मीटिंग बोली आमरो स्वामीनाथन आइगा मन फोन कला ते आउ गोटे मीटिंग रे जीबू बोली आमरो पाड़ी सार कहले मते आरी फोन करी मोर गोटे 3 दिनिया मीटिंग थिला मैडम आरी तापरे पाड़ी सार कहले आमर ऑफिस रे फोन करी G20 रे जीबू बोली G20 बोलार केंतीटा मु G20 जानी नहीं बोली मु सुनलार बहुत खुशी लागला आम सार मन को पचारली पाई तांके कहले सेति बहुत देशर मंत्री मन आस्तिबे तांको संगे बैठबू तांको संगे कथा हबू बोली कहलार मको बहुत खुशी लागला अरे मुई खुशी करी आमर आदिवासी लोग केंतीटा खाई भाई आमर आदिवासी लोग काई काईटा व्यवहार कलाइनी सब दरी करी गाली मांडियार लोडू बनैली मांडियार पिठा बनैली मांडियार केतरा आइटम बनई कर नेइली मांडिया केतरा वेराइटी नेइली देखाइबा पाई आर आमर देशिया लोग आगे आमर मुसुल सांग कुर्तीर से मुसुल नहीं कर जाइली छांगड़ा नहीं कर जाइली कुल्ला नहीं करी बहुत प्रकार जिनस धरी कर जाइली सेटे देखी करी बहुत खुशी हो गला मुई तो बेसी किछि न कहनी आर बेसी कहबी वाला केते गुड़िया छे मुई बहुत जगह जाइछि मिसा आवाड़ नहीं करे आइछि बहुत जगह जाई सम्मान मिसा पाइछि सेटा मते बहुत खुशी लागलानी मोर कुंद्रा पंचायत जगह लो मोर संगे मा मनाचो चासी मनाचो मोर पछवाटे टांकर लागे मुई आके गालिनी टांकर लागे बोले मुई एते दूर गालिनी और तो मुई बहुत किछि न कहनी एति कहि कर रेलिनी एति कहि करी मुई बहुत बहुत धन्यवाद देवी मुख्यमंत्री को मुके एते दूर नेवा पाई आर मिशन शक्ति को धन्यवाद धन्यवाद बसंत so she went for the G20 summit and she is known as Millet Rani. So Vishnu here is managing director of her company and Raimati is director of her millets. She is locally known as Millet Rani. So and Vishnu represents 4.5 lakh women of Mayurbhanj. She is their leader. And Raimati is the leader for all indigenous species and millets, and people go to training. People from other states also take training from her. So I'm very proud to be in their company today. That's it. Yeah. So wasn't that a very heartwarming session? So thank you, Ms. Karthikeyan. Thank you, Ms. Karthikeyan, for sharing with us the sheer scale of work done by Mission Shakti and it's the phenomenal impact on 70 lakh women. I mean, that's a big thing, isn't it? And the ladies with me are just one of lakhs of women that exist in every village, hamlet, small town of Odisha under Mission Shakti. So that's the story of women's empowerment. A couple of 70 lakh, isn't it? Yes. And Ms. Das and Ms. Diuria, thanks a lot for sharing your stories of driving change at the grassroots.